Hi everyone, welcome to the Manula classes. In today's session, I'm going to teach you 10 words which have been taken from the Hindu newspaper. ये जो शब्द हैं ये केवल आपकी मदद इस तरह के क्वेश्चंस के लिए नहीं करते हैं जो कि रीडिंग कॉम्पिटिशन होते हैं, बल्कि उन तरह के क्वेश्चंस में भी करते हैं जो आप सिनोनिम बेस्ड और एंटोनिम बेस्ड या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन या किसी भी वोकैब कैटेगरी बेस्ड क्वेश्चंस में होते हैं. इसलिए इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू to memorize the words initially and then keep on revising. रिवीजन से ही वर्ड जो होता है वो इम्बाइब होता है, वो आप इंस्टिल कर पाते हो अपने दिमाग में. So let us start today's session. The first word in the list is stupor. Stupor is a state where a person is unable to think. So a condition in which it is difficult to think, right? So after being hit in the head with an iron skillet, the burglar sat in a stupor until the police arrived. तो होता है ना, कभी कभी किसी को सर पे अचानक से तेज से चोट लग गया है जिसकी वजह से वो अचेत अवस्था में, हिंदी में अचेत बोलेंगे, अचेत अवस्था में बैठा हुआ है. सो दैट इज अ स्टेट ऑफ स्टupor. So the dazed state of senselessness and numbness are the synonym to this word stupor. The next word in the list is rescind. Rescind मतलब होता है पीछे हट जाना या कोई चीज कैंसिल कर देना. So to take back or cancel. So once their union demands were met, the workers agreed to rescind the strike. So rescind का मतलब होता है पीछे हट जाना या कैंसिल कर देना. Okay, so revoke, repeal and withdraw are the synonyms to the word rescind. The next word in the list is acrimony. Acrimony मतलब किसी के प्रति मन में बहुत कड़वाहट का भरा होना. So a sharp and bitter hatred. So her acrimony for her neighbors manifests itself with this shouting and stomping. मतलब जिस तरह से वो चिल्लाती है उससे पता चलता है कि वो अपने नेबर से बहुत ही ज्यादा acrimonious रिलेशन रखती है, right? So animosity, bitterness, ill feeling are the synonym of this term acrimony. The next word in the list is diminish. Diminish का मतलब होता है कोई चीज जो है धीरे धीरे वो खत्म होना. So to become smaller or lessen. The medicine caused my headache to diminish. So diminish मतलब खत्म हो गया. So decreased, decline and reduce are the peripheral synonym to the word diminish. The next word in the list is mirth. Mirth is amusement, especially as an expressed in laughter. So बहुत ज्यादा excitement, बहुत ज्यादा खुशी. So it was obvious from Kailash's mirth he found the movie to be quite fun. तो mirth मतलब बहुत ज्यादा खुशी होना. So high spirit, merriment and jollity are the synonyms to the word mirth. नेक्स्ट वर्ड इज कॉर्पोरल. देखो ये जो वर्ड कभी भी कॉर्प आता है ना, कॉर्प माने होता है बॉडी. सो कॉर्पोरल मतलब समथिंग विच हैज अ बॉडी. So relating to a person's body especially as an opposed to their spirit. तो ये spirit के बारे में ना बात करके body के बारे में बात कर रहा है, correct? So the illusion seemed so corporeal that I tried to grab it. तो कोई illusion था, उसमें ऐसा लगा कि इसकी तो ये body है, so he tried to grab it. So bodily, fleshly and earthly are the synonyms to this word corporeal. The next word in the list is epigram. Epigram एक figures of speech भी है. Epigram उन्हें कहते हैं जब किसी witty saying, कोई sayings होते हैं उन्हें आप epigram कह सकते हो. So a pithy saying or remark expressing an idea in a clever or amusing way. तो होता ना जैसे जैसा करनी वैसी भरनी. So these kind of word, या जैसा बोगे वैसा काटोगे, या हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती. So these statements can be called as an epigram. So during his speech, the president quoted an epigram from one of his favorite poets. So epigram basically इसलिए यूज किया जा सकता है ताकि वो एक impact दे सके और हमेशा याद रह सकते. So witticism, pun and gem are the synonyms to this word epigram. The next word in the list is laudable. Laudable से साफ साफ पता चल रहा है, it talks about the praise of something, deserving to be praised or admired. So something which is laudable means he or she or it has done something better that it expect a desire, a praise or admire. The soldier was given a medal because of he created a laudable plan for defeating the enemy. So laudable means admirable, reputable and noteworthy. So remember, laudable तभी बोलेंगे जब किसी ने कुछ अच्छा किया हो, praiseworthy किया हो. The next word in the list is reluctant. Reluctant को आप simply ऐसा समझ सकते हैं unwillingness से. जब कोई व्यक्ति किसी काम को ना करने की इच्छा रखता है, that is reluctant. So unwilling, not wanting to take some action,
Though he was reluctant to try the sushi, the man found it to be quite delicious. So देखो, पहले जो व्यक्ति था उसने कभी सुशी ट्राई नहीं किया था. This is one of the Japanese dishes. So reluctant था उसे ट्राई करने में, लेकिन जब उसने ट्राई किया, he found it quite delicious. The next, the synonyms of this word is unwilling, disinclined and resistant. So reluctant मतलब कोई व्यक्ति किसी काम को ना करने की चाह रखना. Next word and last word in the list is plebiscite. Plebiscite is a vote. ठीक है, a vote. So an election in which individual cast vote in favor or against a major proposal or candidate. The results of the plebiscite will determine whether or not the bill will become a law. So ये vote होता है. ठीक है, so vote, ballot and referendum are the synonymous to this word plebiscite. So I hope you have understood all the words discussed in this video. ये पूरा एक सीरीज चल रहा है vocabulary का, so make sure that आप इसे समय से रिवीजन करते रहें. हर वीडियो में I try to incorporate around 10 words which have been taken from the recent The Hindu newspaper. इन शब्दों के अलग मीनिंग भी होते हैं कभी-कभी, but as per the context इसके मीनिंग यहाँ पे लिखे होते हैं. So make sure you have a ready-made note of these all. Keep noting them down and learn them after interval of some time. So all the very best for your upcoming examination. Thank you so much for watching the video till the end. All the best.